ठीक है, पहले आप डर की चीजें सीख लीजिए. दिस चैप्टर इज अबाउट डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. द मोस्ट controversial thing about this chapter is whichever book you study this from, there will be two exercises, exercise A, exercise B. Listen to me. One exercise will be all problems on direct, one will be all problems on inverse. There may be some 20 or 28 problems and some 28 problems. The bad thing in this mode of study is that when you do this exercise, you know that this is direct variation because it's direct variation. When you do this exercise, you know all problems are inverse variation. But in exam, only one problem will come. And you will be tested first whether you have understood कि ये direct है कि inverse है. Because if you don't understand it correctly, you will immediately put the wrong formula and do far. So formula approach, like why I'm saying this, majority of you have tried to show formula approach in profit and loss, which I always say never works. The uneducated guy sitting at a shop or a vegetable market is also interested in his profit. He knows nothing what is mark price, cost price and all, but he won't sell it. That means he has understood the arithmetic. You are trying to do the opposite. You are trying to fit the formula. वैसे नहीं होता है, और इसमें तो कीजिएगा ही मत. And you will solve all questions correctly. I'm upfront saying, because you are prejudiced. Because ये exercise क्या है? All direct. कोई भी एक ऐसा सीबीएसई बुक नहीं है जिसमें एक एक्सरसाइज है जहां दोनों मिक्स 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 है, तभी बच्चा गलत करता है. एंड ऑल द बैचेस आई हैव टॉट, दे आर ऑल डूइंग गलती हियर. ये भी करेक्ट करता है, ये भी करेक्ट करता है. जब सडनली एक प्रॉब्लम दे देता हूं ना, करेक्ट भी कर लिया ना, तो श्योरिटी से नहीं, तुक्के से करेक्ट हो गया है और रॉन्ग. सो चीज को समझिएगा पहले, बिना समझे प्रॉब्लम मत कीजिए. बिना समझे करोगे, एक करेक्ट होगा, दो करेक्ट होगा, थर्ड वन यू विल ऑटोमेटिकली get pissophied. Any school which has started to do direct and inverse variation, any school so far? No. So very good. So that means you all are absolutely khali dabbas, and it's very nice to handle khali dabbas. चलिए कुछ examples सीखते हैं. Okay, mathematics, this is a variation type where we see the comparison of two different type of quantities. Two different type of quantities. Let's say there is a quantity A and a quantity B. You can call it as a quantity, you can call it as a parameter. मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं. जैसे मान लो कॉस्ट ऑफ गुड्स एक पैरामीटर है एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक और पैरामीटर है या एक और क्वांटिटी है. इसको हम ए से डिफाइन कर रहे हैं, इसको बी से. Give me water. Something, some problem? हाँ, so take it. All okay? Yes. Hello. Tasted like water only, na? Because I sometimes use it for bringing petrol also. Chalo, Pio, we are waiting for you. So suppose there are two parameters, cost of goods and quantity of goods. ठीक है, don't keep it there, it will fall. and then cost of goods, तुम्हें चाहिए क्या सामर्थ? हाँ, दे दो, उसको दे दो. और क्या चाहिए किसी को? cost of goods and quantity of goods. बात मैं करता हूं, प्यास तुम्हें लगती है. Now ask yourself, how does one parameter relate to the other one? If you buy less potatoes, will the cost be less or more? Less. 1 किलो पोटेटो खरीदा, 50 रुपए दिया. 2 किलो खरीदोगे तो कम दोगे कि ज्यादा दोगे? ज्यादा दोगे. 3 किलो खरीदोगे तो कम दोगे तो ज्यादा दोगे? ज्यादा दोगे. तो इसका मतलब, एक और एग्जांपल लेते हैं. हाँ, लेट्स से फ्यूल नीडेड और यहां पे लिखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल. फ्यूल नीडेड और डिस्टेंस ट्रैवल. ज्यादा दूर जाओगे तो कम फ्यूल चाहिए कि ज्यादा चाहिए? ज्यादा चाहिए. इसका मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ता है, then another quantity is automatically rising up. Such a case we say that the two quantities are directly varying to each other. If on increasing one quantity, the other quantity automatically increases, then it is said to be directly varying.
There are a lot of such things. Summers versus sale of ice cream. If the temperature goes up, the sale of ice cream will also go up. The demand for ice cream will also go up. Such things are said to be directly varying to each other. Have you understood? One quantity अगर बढ़ने से दूसरा quantity अपने आप बढ़ता है, then that is known as a direct variation. In such problems, whenever the question will be given, first ask yourself, what is the question all about, and ask like this. Oh, this is about fuel and distance. Distance बढ़ेगा, fuel बढ़ेगा. This question is direct variation. Have you understood? So let us now properly understand that what is direct variation. If two quantities say x and y are so related that if x increases, it implies that y also increases. This means implies. If two quantities say x and y are so related so that if x increases, y also increases, then we say x varies directly with, or say we'll say what we have said, if x increases, na, so we say, एक मिनट, huh? we say y varies directly with x. Now look, why did I not write x? Because I have said if x increases, where are you giving the disturbance? You're giving the disturbance in x. Where do you feel the jolt? You feel the jolt in y. So you say y varies directly with x. y वैसे तो चुपचाप बैठा है, लेकिन जैसे आपने x में छेड़छाड़ कर दिया, y में भी छेड़छाड़ आ जाएगा. कैसा टाइप? x बढ़ेगा, y बढ़ेगा, x घटेगा, y घटेगा, वाइस वर्सा नहीं देखोगे आप. Have you understood? If x increases, इसमें हम क्या कहते हैं? We write it like this. X varies is shown like this. Direct. Sorry, again I am writing wrong. We say y varies directly with x. This is the symbol. Varies is written like this, like an alpha. Y varies directly with x. यहाँ तक. Why have I said anything with theta? You concentrate on what is being taught in the class. No, that is not theta. Have I said theta from my mouth? Then if on increasing x, y increases, then y is said to directly vary with x. This is how the mathematically we write it. Y varies directly with x. Y can be what? Fuel consumption. X can be distance. You're trying to increase. You're talking to me like this, sir. If I travel 10 kilometers, I said you need 1 liter fuel. Sir, if I travel 20 kilometers, you need 2 liter fuel. ठीक है ना? ऐसे केसेस में, हालांकि CBSE नहीं बोलता है, पर आप जानो, ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं? इस x को हम बोलते हैं independent variable. There are two variables here. Independent variable means where you can vary it as the way you want. Independent है ये. आप x को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जो आपकी मर्जी. You increase the distance, you reduce the distance, but every time you do छेड़छाड़ here, this fellow gets impacted. So this fellow will be always known as my dependent variable. For example, the price that you will pay in a Ratnadeep store for buying mangoes depends upon how much of mangoes are you buying. So who is the independent variable? The quantity is the independent variable. Sir, let me buy 1 kg. The money that you buy is dependent. It is dependent on how much you buy. Are you understanding the logic? Money is not independent variable. Quantity is the independent variable. Sir, he wants to buy 40 kg. Fine. She wants to buy only 2 kg. Fine. You are varying the quantity. Based on that,
what money she will shell out changes. Is this becoming clear or not? Okay, so no more we will write these languages now. Now we go back exactly to mathematics definition and we say direct variation. So in direct variation, we will say y varies directly with x. What does this mean? This means if x increases, it implies y has to increase. And the opposite is also true. If x comes down, y also comes down. Temperatures have dipped. The sale of ice cream has also dipped. Temperature has gone up. The sale of ice cream has also gone up. Holiday season has started. The footfall at Smash has also gone up. Exam season has started. The footfall at Smash has gone down. वो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, समझ में आ रहा है? डायरेक्ट वेरिएशन में एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी बढ़ना पड़ेगा. अच्छा, now we now want to replace this symbol with equal to. So when we replace it with equal to, we say y is equal to, we write something called k and then we write x. This k is known as constant of proportionality. Constant of proportionality. When two quantities are directly varying to each other, if you want to replace the variation sign with equal to, then that equal to होने से आपको एक constant डालना होगा, and that constant is known as the constant of proportionality. Okay. Now, such sort of problems have got one very interesting observation. You know what is the observation? It's something like this. Say, I am having an option like this, say, rate of mangoes, okay, and or say, let us make it more interesting. मान लो, we have something like this. Let's say something like this. See what I'm writing. पहले समझो आप यहाँ पे. Let's say this is say, let's say this is quantity and let's say this is cost. Okay? If I am buying 1 kg mango, suppose the cost is 50. ठीक है? ये वेरिएशन में भी बहुत तरह के रूल्स हैं. ये जो आप ग्रेड 8 में पढ़ रहे हो ना, इसे हम कहते हैं लीनियर वेरिएशन. लीनियर, वेरी इजी टू प्रेडिक्ट. Higher classes में these variations take different model. Y will be proportional to x square, x cube, something different. So let's first understand linear. Linear means very easy to predict. 1 किलो में कितना देंगे हम? 50 रुपीस. अगर हम 2 किलो खरीदेंगे तो कितना देंगे? 100. अगर हम 0.5 किलो खरीदेंगे तो कितना देंगे? 25. See, you are able to always project it. Are you understanding? अब उस k को समझना जरूरी है. आइए, मान लो we take our quantity as x and cost as y, say for example, right? And we are finding the cost is varying directly to the quantity that you are purchasing. Is it coming clear right now? It's okay. यहाँ से हमने बोला that whenever you want to make y equal to x, then you have to bring a constant which is known as constant of proportion. आपको एक k लाना पड़ेगा. अब जरा इस इक्वेशन से, अभी तो लीनियर इक्वेशन काम में आएगा ना. I can also write that, can I not write this, that y over x is equal to k? I can write this. That means every y over x should give me something constant. एक k आना ही पड़ेगा, constant आना ही पड़ेगा. तो इस टेबल को थोड़ा घुमा के लिख लेते हैं, नहीं तो आपको समझने में मुश्किल हो जाएगा. आओ इसको घुमा के लिखते हैं, y को ऊपर करके लिखते हैं. ठीक है? Let's take this as y and this as x, right? जब हमने 1 किलो खरीदा 50 दिया, 2 किलो खरीदा 100 दिया, ठीक है ना, एंड हाफ किलो खरीदा तो कितना दिया? 25 रुपीस दिया. If this is y and x, then every of this term is y1 x1, y2 x2, y3 x3. जरा आप सबका रेशियो लेके देखो तो, take y1 and x1. What is y1 upon x1? 50 upon 1. कितना आया? 50. What is y2 upon x2?
100 upon 2 कितना आया 50. What is y3 upon x3? 0.5 upon 25. 50. K. Y upon x is always a constant आपने लिखा ना, so y upon x is always a constant. हाँ उल्टा लिख दिया बेटा, सॉरी, थर्ड वाला उल्टा लिख दिया, सॉरी. थर्ड वाला हमारा होगा 25 by 0.5. This is also 50. Did you understand the trick now? If you see y upon x, what did you write? Y upon x as k. So y1 by x1 is also k, y2 by x2 is also k, y3 by... This is a very predictive type of mathematics. Once you know the ratio, you can populate the chart as much as you want. And the initial problems that you will get, आपको ऐसा एक चार्ट दे देगा और बोल देगा डायरेक्ट वेरिएशन, यहाँ पे कुछ देगा, यहाँ पे मिसिंग करेगा, यहाँ पे मिसिंग, fill in the blanks. Won't it be easy for us to fill it? Very easy. And the biggest issue is all the problems will be from direct variation only. So you know that y upon x is constant. ऐसा करते करते ना आप prejudice के victim हो जाते हो. Then the next exercise will be all on inverse variation. And then in exam only one question will come. That time we have to understand whether this problem becomes to direct or inverse, then only we have to use our formula. So इसको आप अभी copy मतलब don't think that this is just a preliminary idea I am giving you. चलिए अब time हो गया है, एक बार और अच्छे से देखें. So when we talk about direct variation, now whatever I am writing, if you don't understand anything, don't keep it suppressed. Again, I'm saying immediately ask me. Direct variation is a study about two quantities, y versus x. We are going to see how does y get impacted when x is changing, or how does it, you can make it x versus y also, your wish. I am thinking it as y versus x. We say that if on increasing x, we see that y also increases, then in such a case we say y is directly proportional to x. रुक जाओ, पहले लिखो मत, समझो. We also can also say y varies directly with x. And to write it mathematically and avoiding all these language, we say y varies directly with x. इसका मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग. हैव यू अंडरस्टूड? लेकिन मैथ्स में हम ऐसे रिलेशन के साथ तो काम नहीं कर सकते. ऑल वी नो इज लीनियर इक्वेशंस. सो इसको इक्वल में चेंज करना पड़ेगा. सो व्हाट डू वी राइट? वी राइट दिस इंप्लाइज y must be the product of some constant of proportionality into x, where if anyone is interested to know what is k, then k is y upon x and known as the constant of proportionality. And this thing will always remain constant throughout the problem, irrespective. अभी आप सोच लो सिंपल लैंग्वेज में, 1 किलो आम का दाम कितना है? 50 रुपए. यार तुम ट्रक खरीद के ले जाओ, फिर भी तुमको चार्ज कितना होगा? 50 रुपए के रेट से ही. So the rate remains constant. Y over x remains constant throughout the problem. I bought 2 kilo, I paid 100. Sir, what is the applicable rate for you? 50. She bought half kilo, she paid 25. What is the applicable rate for her? 50. She bought 5 kilo, she paid how much? 5 kilo में कितना देगा? 250. Then also the applicable rate for her is 50. So y upon x does not change. Have we understood? We generally get two type of problems in this exercise. अभी हमने inverse नहीं पढ़ाया, ये direct को पहले सीखेंगे. इसमें दो तरह के problems आते हैं. One type of problem will be word based. 99% you will get that only. Another is try and predict the matrix. The matrix will be given to you and we have to predict what the matrix is all about. ठीक है? Which is the easier one. Let's try to first see whether we are able to predict the matrix or not. Okay, पहले कुछ matrix के problem करते हैं और उसके बाद जाएंगे. Let's take some matrix problems. Okay.
Say, look at the board. किताब अभी छोड़ो. Let's first understand. Okay, let's take one matrix problem. The matrix will always be in this manner. There will be an x and a y and values of x and y. And we have to do just some predictions. This baksa is very important in this chapter. Okay. इसमें कितने हैं? 1 2 3 4. 1 2 3 4. So how have they written? They have written x and y. So I am writing x and I am writing y. And let me fill up the values. अन्विता बोलो तो x के वैल्यूज क्या क्या है? 3 के बाद हाँ x1 फिर x2 10. y की वैल्यूज बोलिए 36 60 96 and y1. Okay, this is y1. Y1. Okay, we have to predict. In this problem they are saying find the values. We have to find the value of x1, x2 and y1. And when the problem starts, they will tell us that x varies directly with y, or even if they say y varies directly with x, both mean the same. X varies with y or y varies with x directly. ठीक है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है. डायरेक्ट वेरिएशन में सबसे पहले हम कैसे लेंगे? Let us take that x varies directly with y. Means x should be equal to some constant k into y. Have you understood? यहां ध्यान दीजिए. Which means x upon y should always be a constant, where we write k is equal to a constant, and this constant is called constant of proportionality. ठीक है, तो x k constant होगा. बस ये मिल गया, हम पूरा प्रॉब्लम कर सकते हैं. अब यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स में the full data will be given to us. Let us identify that sort of box. If you look at this box, both the data is given to you, है कि नहीं? And this is more than enough for us to solve the problem. ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? इस पूरे प्रॉब्लम में all x by y should be constant, which means in this whole problem 3 by 36 must be equal to xi by 60. This should be equal to x2 by 96, should be equal to 10 by y2. These ratios cannot change. These ratios have to be same, because we know that all these ratios equal to some constant k. Yes or no? अब बस इससे वो रेशियो निकाल लो, जस्ट इससे निकाल लो. कितना है? 1 by 12. And try to solve these two first. इन दोनों को सॉल्व करो तो 3 by 36 is equal to x1 by 60. Agreed? अब 3 से, अब यहाँ पे ना आपको सिंप्लीफिकेशन यू शुड नो इन प्रॉपर मैनर. हाउ डू यू सिंप्लीफाई? इजी देखो, 3 12s are 30. So 3 12s are 36, 3 20s are 60. Agreed? और कैसे जाएगा? 3 4s are 12, नहीं, 2 6s are 12, 2 10s are 20. और कैसे जाता है? 3 2s are 6. So you are left with 1 upon 2 is equal to xi by 10. तो xi की वैल्यू कितनी हुई बोलो? और 2 से 10 को काट सकते हो, 5s are 10. xi की वैल्यू हुई 5. इसको प्रेडिक्ट करा कि 3 by 36 1 by 12 सब 1 by 12 ही होगा. कि कितने भी, मैं कह रहा हूं कितने तरीके से आप कर सकते. चलो आपको ऐसे मंजूर नहीं, ऐसे कर सकते हैं. देखो, चलो कोई बात नहीं. लेट्स सी लाइक दिस. ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझो. इतना डिस्ट्रैक्शन करते हो तो ना पीछे बैठ के. 3 by 36 is a given ratio. How much does 3 by 36 equal to? 1 by 12. Please understand all these should be 1 by 12. ठीक है, अब आप कैसे भी करो, जैसे आप ऐसे लिख सकते हो, xi और x1 by 60 should be something into 1 by 12, है ना? Something into 1 by 12 should give you this, है ना? तो कितना होना चाहिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने से? 12 into 5 is 60, so this 5. इसका मतलब ये 5 के पास आना चाहिए. ऐसे हम करते नहीं है. This is not the right way to do. The right way to do is that you compare every unknown with this ratio. So let's start comparing. ठीक है, चलो आप कंपेयर करते हैं. x1 by 60 is equal to
3 by 36. You tell me, will you be able to solve this or not? Yes. So you'll get the value of x1. ठीक है. Tell me, x1 मिल जाने के बाद आप इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो, पर आप इसी से करना चाहते हो तो भी चलता. All should be same. So your next option should be, once you get the value of x1, you can now write x1 by 60 is equal to x2 by 96, or you can still continue with 3 by 36 is equal to x2 by 96. बस ऊपर नीचे मत कर देना. ये टफ है? कुछ भी टफ नहीं है. जरा कैलकुलेट कीजिए तो सबका. ट्राई ऑन योर ओन. y1 की वैल्यू निकालिए. Take out all the values one by one. Three by 36. So you should write like this: since x varies directly with y, which means x by y should be a constant. So use that for all the things there. Anna, did you understand this? Harshit? X by y should be a constant. Acha, if the problem was given to you in a manner of y by x, then also it is correct. Y by x will also be constant. कोई टेंशन नहीं है. Once it is directly varying, x by y is same as y by x. Just try to find out x1 first. ऐसे अगर मुंह से करे, ऐसे करे तो क्या होगा? 3 कितने से जाता है? 3 12 से 36 ना, मतलब ये 1 by 12. इधर भी 12 करना है तो इधर कितना होना चाहिए? 5 12 से 60. इधर भी 12 करना है, 12 8 जा 96, इधर 8 आएगा. और इधर 10 है और इधर 12 लाना ही है तो इधर 120 होना चाहिए. Then 10 can cut this and this should be the answer. आप प्रेडिक्शन से भी कर सकते हो. बोलो अनन्या, कुछ एनीथिंग दैट इज हिंचिंग यू. कुछ रखना नहीं है. यू मे आस्क समथिंग इडियटिक, डोंट वरी, दैट इज माय कॉल, बट प्लीज डोंट सप्रेस. बट यू प्लीज डू इट इन दैट प्रॉपर इक्वेशन मैनर. इस प्रॉब्लम को करने का सही तरीका कैसा रहेगा? यू विल ऑलवेज राइट सिंस x varies directly with y, therefore x upon y should be equal to k, and k is a constant. ऐसे लिखिएगा, k is a constant. Therefore k is equal to 3 by 36 which is equal to 1 by 12. बस बाकी आप उससे निकालते जाइए. So x1 should be equal to k into y1. k की वैल्यू कितनी है? 1 by 12. y1 की वैल्यू कितनी है? 60. That means this is equal to 5. x2 should be equal to k into y2. k की वैल्यू कितनी है? 1 upon 12. y2 की वैल्यू कितनी है? 96. 12 8 जा 96 हो गया. x3 should be equal to k into y3. So here x3 is given as 10. k is 1 upon 12 into y3. So our y3 becomes equals to 120. First find out k. करो हाथ से करो. k निकाल के करो जैसे मैंने किया, तब आपका प्रॉब्लम इजी होगा और इसी से करना चाहिए. Should I do it once again? I don't mind. एक बार फिर से करके दिखाऊं? चले एक बार फिर से करके देखते हैं. आ जाओ, कोई बात नहीं. आप बोलो मैं 10 बार करूंगा, लेकिन आप जबरदस्ती मत समझिए. Okay, see how the problem starts. We'll write the problem as देखो मैं कैसे लिखता हूं. As x varies directly with y. बिल्कुल आप ऐसे दोबारा कीजिए, कोई बात नहीं. As x varies directly with y, it means x should be equal to some k into y, है ना? Where k is equal to x by y is a constant. Have you agreed? अब हम k की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, k is equal to, फर्स्ट वाले में दिया हुआ है दोनों,
x by y, so k is equal to 3 by 36, which is equal to 1 upon 12. Have you agreed? Understood? So we have got the value of k. Now we just keep on multiplying this. x1 will be k y1, x2 will be k y2, x3 will be k y3. तो हम कैसे लिखेंगे? Now हमें ये निकालना है x1 will be equal to k times of 60, और x1 is equal to k into k means k का वैल्यू डालोगे, सॉरी, k's value is 1 upon 12 into 60. 12 5 are 60, और x1 is equal to 5. तो हमें एक वैल्यू तो मिल गया. Now in this again x2 is unknown, right? So this is your first calculation. Your second calculation is x2 is equal to again k into 96. Sir, how are you writing all these things? Because this is the parent formula. X is equal to ky. उसी को ही लिख रहे हैं. ये जनरल फॉर्मूला है. x इज इक्वल टू k इंटू 96. ठीक है, तो x2 की वैल्यू कितनी हुई? 1 by 12 इंटू 96, यानी कि 12 8 जा 96, तो ये वैल्यू आया 8. थर्ड वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है. थर्ड वाला में हम क्या लिखेंगे? x3 इज इक्वल टू k इंटू y3. x3 की वैल्यू कितनी है हमारी? 10. 10 इज इक्वल टू k इंटू k की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 12. 1 अपॉन 12 इंटू y3, और y3 की वैल्यू कितनी आई? 12 into this, which is equal to 120. तीनों वैल्यूज आ गए. This is the way to do the problem, actual problem. ठीक है, ये कॉपी कीजिए. और फाइन कैसे लिखते हैं? चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं, और उसको आप लोग लिख के कीजिए. तो आर.डी. शर्मा में दीज आर लाइक भर भर के हैं. चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं, एंड आई एम जस्ट वाइपिंग आउट सम डेटास. हाँ बोलो बेटो. हाँ 1 सेकंड क्यों, 10 सेकंड, मैं तो ये डेटास मिटा रहा हूँ. नहीं, नए से ही लिखेंगे, नए से लिखेंगे. चलो आप कर लो. चले एक प्रॉब्लम आप लोगों को देते हैं, आप लोग कीजिए, एंड आई विल हेल्प यू, डोंट वरी. इसमें बराबर के हैं. चलो ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम. Okay, the problem is same out here also. X varies directly with Y, and the data we have got are
fill in the blanks, sorry, fill in the blanks. अब ब्लैंक्स में आप क्या करो, जब आप प्रॉब्लम करोगे ना, यू कैन पुट सम अननोन्स, आपको तो पता नहीं ना। हाँ बिल्कुल, तो x1 x2 डालने का समझ टेक्निक क्या रहता है, पहला कॉलम हमेशा x1 होता है, तो इसको हम क्या डाल लेंगे x2, इसको हम डालेंगे x2, ये क्या है x3, इसको कितना डालेंगे y4, y1 y2 y3 y4, ठीक है। So problems, how do we start? What is our first step? We will write solution as x varies directly with y. We can write x is equal to k into y, or k is equal to x by y, and we write k is equal to constant of proportionality. ठीक है, तो k की वैल्यू निकाल लीजिए। सो k कैन बी इक्वल टू 2.5 by 5, which is equal to कितना? So 1/2. 1 by 2. 1 by 2. So k is equal to 1 by 2. अब आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दीजिए। पहला अननोन निकालने के लिए क्या लिखेंगे, x2 is equal to k into how much? 8. x2 is equal to k into 8, और लिखिएगा, हाँ x2 should be equal to k की वैल्यू कितनी है बेटा 1 by 2 into 8, और x2 should be equal to 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4. Then number 2, x3 should be equal to k into 24, और x3 is equal to half into 24, और x3 is equal to 12, यानी कि ये आंसर है 12. So where were you so far that I am teaching? You don't see this as 2.5? थर्ड वन में क्या लिखेंगे, 21 is equal to k into y4, और 21 is equal to k की वैल्यू कितनी है हाफ into y4, so y4 should be equal to 21 into 2, which is equal to 42, तो y4 की वैल्यू कितनी आई 42. अब आप खुद चेक करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा, आप चेक करके देखो, 2.5 2 times, so this is half, 4 2s are 8, so this is half, 12 2s are 24, this is half, 21 2s are, this is direct variation. समझ में आ रहा है, हाफ है आपका रेट, हाफ के रेट से सब लोग वेरी कर रहा है, समझ में आया, बहुत ही आसान है डायरेक्ट वेरिएशन में. ये एक टाइप का प्रॉब्लम आता है जो 2 मार्क या 3 मार्क को 2 मार्क दे सकता है आपको, मेन एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम नहीं आते, मेन एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस. एवरी प्रॉब्लम, व्हेन द प्रॉब्लम इज बीइंग आस्क्ड, you ask yourself, is this problem a direct variation or inverse, then only use the formula. अच्छा, अभी क्या होगा प्रॉब्लम, आप देखिए, अभी मैं आपको जितने प्रॉब्लम कराऊंगा ना सारे डायरेक्ट होंगे, तो एक चीज आप नहीं करोगे, क्या बोलो तो, आप अपने आप को पूछोगे नहीं. एवरी प्रॉब्लम यू विल प्रोसीड विद दिस स्टेप, x is equal to ky, x is equal to ky, because you know this is an exercise of direct variation, and this is the biggest drawback of CBSE. इसके बाद जो एक्सरसाइज होगा सारे प्रॉब्लम्स इनवर्स, लेकिन एग्जाम में एक एक प्रॉब्लम आएगा, उसको पहचानोगे कैसे, और सब बच्चे वहीं पे गलती करते हैं. चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं. डन, आई होप, है ना. Harshit, Ritisha is also there. Okay, have you all understood this working? This is the basic working. So whenever it is a direct variation problem, please understand mundu by leg is equal to constant, or leg by mundu is constant, whichever way. अच्छा, अब उल्टा by उल्टा करोगे तो भी 2 2 2 2 आएगा. If x by y is half, y by x is 2 2 2 2 2, दोनों साइड इक्वल आएगा. इसलिए
वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, उसमें कोई गलती नहीं होगा, कोई काटेगा भी नहीं, बट रेशियो सही लेना चाहिए। जोमेटो है ना। चलो आ जाइए, प्रॉब्लम करते हैं, पहला प्रॉब्लम। ओके, नहीं वहां से कराऊंगा ही नहीं तुम लोग वहां देखते रहोगे, इसलिए हम तो यहां से करेंगे। मैं भी बदमाश, मैं भी बदमाश, मैं वहां से नहीं कराऊंगा। ओके, प्रॉब्लम कैसा है सुनिए। हमारा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन, a car travels 432 kilometers 432 kilometers with 48 liters पेट्रोल। 48 लीटर पेट्रोल डालने से गाड़ी 432 जाती है। हाउ फार will it travel with 20 liters? अनन्या मैडम, ये प्रॉब्लम देख के आपको खुजली होगा कि हम इसे यूनिटरी मेथड से कर दे, लेकिन आपको जीरो देगा, वैसे नहीं करना है। देखने से बड़ा इजी लगता है ना। आइए इस प्रॉब्लम को करने की कोशिश करते हैं। ऑल ऑफ यू हैव रिटन द क्वेश्चन, बी अ लिटिल बिट फास्ट। हैव यू रिटन द क्वेश्चन? You need not write the whole story here, write a small thing, car 432 in this much and this much, it is getting recorded. Shall we do? Acha. Whenever you get a question, now suppose this is a question that has come in exam, the first job that you should do is you should find out what are the two things here being talked about and how to identify it. Number किसके साथ associated है? किलोमीटर्स, लीटर, यानी कि डिस्टेंस और फ्यूल की कहानी हो रही है। समझ में आया? तो आप पहले यहां पे लिख लीजिए डिस्टेंस, मन मन की बात है, डिस्टेंस वर्सेस फ्यूल, और अपने आप को सवाल पूछिए, अगर मैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, डू आई नीड लेस फ्यूल और मोर फ्यूल? मोर फ्यूल। इफ आई ट्रेवल लेस डिस्टेंस, आई विल नीड लेस फ्यूल। इफ आई डोंट ट्रेवल ओनली, आई नीड नो फ्यूल। दैट मीन्स द क्वांटिटीज आर directly related. So the first thing that you should, don't copy, look at me how I'm saying, how I'm doing, don't write anything, we'll write solution. Distance traveled is directly proportional to fuel consumed, or you can write fuel consumed is directly proportional to distance traveled, all mean the same, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप घुमा के भी लिखो तो भी एक ही बात है, जितना फ्यूल कंज्यूम करोगे उसी के ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल कर। आप 2 लीटर चलाओगे देखते जाओ, 4 लीटर तो ज्यादा जाओगे। समझ में आया? दिस इज योर फर्स्ट स्टेप वेर यू फर्स्ट ascertain, इधर से बाद में, but you first ascertain that this problem is a direct variation problem. Our next step will be to make the baksa. What will we make? Baksa. So next step is about baksa. Baksa is very important. If you don't make baksa, मैं होने से तो मार्क्स काटूंगा, पता नहीं, योर स्कूल माइट लव यू, सो यू मेक द बक्सा। बट नाउ बक्सा विल बिकम वेरी सिंपल, very simple. Just see why I have drawn only 2 columns. So I write here distance and I put the unit kilometer, and I write here petrol and I write the unit liter. समझ में आया? One data will be given to you. देखो डेटा दिया हुआ है 432 किलोमीटर in 48 liters. Do you dispute? This is given in the question. पूछा क्या है आपको? 20 लीटर्स में कितना डिस्टेंस जाएगा, यही तो पूछा है आपको, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप x पकड़ के रख सकते हो यहाँ पे, राइट। सो नाउ व्हाट कैन यू राइट? यू कैन स्ट्रेट अवे राइट। नाउ देयर आर 2 ways. इतना तामझाम करने की जरूरत है। दिस इज योर स्टेप नंबर 1, दिस इज योर स्टेप नंबर 2। बोलो 1 और 2 स्टेप्स में एनी डाउट? Any doubt on 1 or 2? Third step is to find out the value of x. So third step में हम कैसे निकालेंगे? जहां पे x है x upon 20. अरे this column by ratio must be equal to this column ना। So x upon, मैंने x को पहले क्यों लिखा? क्योंकि हम unknown को लेफ्ट में रखते हैं। Should be equal to 432 divided by 48 and
वेट, बर्तन एक बारी मांजना, x इज इक्वल टू 20 इंटू 432 डिवाइडेड बाई 448। चलिए करने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हाँ, अगर हम करेंगे कैसे जाएगा, 4 5 जा 20 और 4 12 4 जा 48, ठीक है, ये जा रहा है, 12 से जाता है क्या, देखो तो, 12 3 जा 36, 37 38 39 40 41 42 43, 12 3 जा 36 एंड 72, 12 6 जा 72 हो गया। तो 5 इंटू 36 करने से कितना आएगा, 5 6 जा 30, 5 into 3 is 150 and 180. But x is what in our thing, kilometers. So 180 kilometers. Now you write this is your third step, and your fourth step you write with 20 liter petrol, distance covered will be equal to 180 kilometer. Full mark. हो गया, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। अब ये प्रॉब्लम कैसा आया, ये प्रॉब्लम आया फ्यूल एंड डिस्टेंस। अगला प्रॉब्लम आएगा कॉस्ट ऑफ मैंगोज एंड क्वांटिटी, टाइम टेकन एंड वर्क, मैन टेक्स 5 minutes टू डू दिस वर्क, वर्क को डबल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, समझ में आ रहा है। एक और कर ले, अच्छा एक और कर लेते हैं, आप बिल्कुल लिखिए, मैं चाहता हूं आप इसको लिखिए, ओके लिखिए, और फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करने बोल देता हूं, घर पे आराम आराम से करेंगे। Okay, your job is, there are only 2 we have already done, so there are 7 examples. I don't want you to solve any unsolved problem. I want you to do rasa ke problem number 3 to 9. 3 to 9 are all word problems, but I want every problem to be done in this manner. I'm not asking you to submit, that is up to you. But test में मैंने submit लिखा है कुछ कुछ को, please submit लिखा है किसी किसी को, ठीक है। अच्छा उतना बड़ा मत बना दे, स्पेस जाएगा, it's only about 2 things, है ना, नेक्स्ट टाइम से छोटा छोटा बनाना। 3 to 7 9 7 problems, 1 and 2 you have already done, 1 and 2 were box type problems which we have done, but ये प्रॉब्लम ही ज्यादा आएंगे। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं, कपड़ा खरीदना और पैसा देना, ज्यादा मीटर कपड़ा खरीदोगे तो ज्यादा पैसा दोगे, उसके ऊपर भी आ सकता है डायरेक्ट वेरिएशन। द मोर लेंथ ऑफ क्लॉथ यू बाय, द मोर मनी यू विल शेल आउट, यस और नो। So whenever you are doing a problem, first ask yourself, are these 2 quantities directly related? If so, proceed like this. Sir, if they are not, that we will do in our next exercise. The lesser you study, the lesser marks you get. Direct variation. Inverse variation is the more masti you do, the lesser marks you get. That will be in inverse variation. The more class you miss, the less marks I get. This will be in Hannah. So easy to understand. See inverse variation. Everything put to yourself. The more I play, the more fitter I get. Direct variation. The more I play, the less I study. Inverse variation. This will be in it. And the less I study, the less marks I get. Direct variation. ठीक है भाई साहब, आप भी मन को लगाइए, मन को काबू में बिठाइए, बहुत जरूरी है इस एज में। इधर उधर की बातों में कम भटकिए, ये स्कोर सबको एक एहसास है, इससे ज्यादा स्कोर किए हो ना तो क्यों स्कोर से खुश होना, मेरी तो सीधी बात है। इज दैट योर पोटेंशियल स्कोर? नो, आई डोंट एग्री, एटलीस्ट किसी के पोटेंशियल का नहीं है। आई डोंट एग्री दिस फॉर एनीवन। And if some guys can score, they also have 2 hands and 2 legs, they also had Diwali, they also had Masti, they also had everything. What is different in them? और ऐसा नहीं कि खाली बॉयज ने स्कोर किया, एक आध लड़के ने भी स्कोर किया है, तो अगर वो स्कोर कर सकता है तो हम भी स्कोर कर सकते हैं।
ऐसा मत बोलो सर गर्ल्स आर ऑलवेज दे आर मोर स्टूडियस, ऐसा कुछ नहीं। एक लड़के ने भी स्कोर किया और वो भी हमेशा स्कोर करता है। वो पेन का ढक्कन का क्लिप टेढ़ा भी करता है लेकिन फिर भी स्कोर करता है। तो वो भी छठ पूजा करता है, सब करता है। राइट, वी एंड टुडे and our next class will be Monday we go back to compound interest. But anyone has problem in any of the examples, please in this weekend, my folded hand request, please do your question paper, वो ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। और मन छोटा मत कीजिए। अगर आप बोले कि सर आप डांट रहे हो हमें, डांट इसलिए रहे हैं क्योंकि इसलिए नहीं कि तुम्हें कम मिला है, इसलिए कि तुम इसके योग्य नहीं हो। योर लेवल इज मच मोर। ठीक है, चलो